Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Hi, Sukti. How are you? How's everyone? Okay, so yesterday we did basically a rendering of a print that was self-made, that was earlier made, and we also went through various tools to do that. Okay. So today what we're going to do is we are going to take up a fashion croquis from internet only, and that we will drape and then we'll render that. Okay. So before that, I would like to open yesterday's class work. Ma'am, doubts clear करने हैं आज, ये जो last में कर लेंगे. So yes, of course, that's what I was about to say कि हमने जो कल की क्लास में करा था उसके जो भी आपके डाउट्स हैं आप आज पूछ सकते हो. मैं वही वाली क्रोकी ओपन कर रही हूँ. ठीक है, तो आप पहले आप वो क्लियर कर लेंगे फिर हम आज का टॉपिक. So have I saved that yesterday? Let me see. Okay, can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, just a moment. हाँ जी. So I don't remember, मैंने शायद कल वाला जो है वर्क वो सेव नहीं करा था. But then you can verbally ask me that what was your doubt and I'll clear that, and I'm opening up that particular croquis that was scanned. Okay. So Supti, you can ask me आपके क्या doubts थे कल के. मैम जैसे इमेज पे आपने जो लाइक पैटर्न जो था वो जैसे लगाया था उस पे, एक तो वो था डाउट कैसे लगाया था उसको. Okay. दूसरा वो ज्वेलरी का जो मैंने पूछा था, एक मुझे थोड़े टिप्स चाहिए थे उसके. Okay, ज्वेलरी डिजाइनिंग कैसे करनी है? Okay. So we'll take an outside print. आज हम ऐसा करते हैं, हमें एक आउटसाइड हम एक कोई भी एक मोटिव लेते हैं. ठीक है, उस मोटिव को हमें क्लीन कैसे करना है हम ये देखेंगे, उससे प्रिंट कैसे क्रिएट करना है हम ये देखेंगे, और उसके बाद में उसी मोटिव को हम लोग रेंडर करेंगे. ठीक है, तो ये भी सेम फैब्रिक मेरे पास है, यहीं पे है मेरे पास. ये भी प्रिंट हुआ था, ये भी प्रिंट हुआ था. तो ये पूरी कलेक्शन एक्चुअली लाइव थी, ये पूरी कलेक्शन ना. Okay, so there is a site called Yandex, which is a very good site for the graphic designers. Okay, so see, हम Google से क्यों नहीं लेते हैं images? कोई बता सकता है? Why don't we refer Google for the same? मैम एक्चुअली ना क्लियर पिक्स नहीं आती है, वो पिक्सल ना हम जितना भी जूम करेंगे वो पिक्सल फट जाती है, तो
तो इसलिए हम गूगल की पिक्चर्स यूज नहीं करते हैं। यस, तो इसकी डिजिटल लैंग्वेज क्या है एग्जैक्टली हमें क्या बोलना चाहिए कि गूगल पर जो पिक्चर्स होती हैं दे आर फर्स्ट दे आर नॉट ऑफ वेरी गुड रेजोल्यूशन, ठीक है। सेकंड, जो वो पिक्चर्स होती हैं वो गूगल पर जो पिक्चर होती है कॉपीराइट होती है। देखो करिश्मा, एक्चुअली कॉपीराइट होती है, बट द पॉइंट इज कि आप गूगल पर जो पिक्चर्स है ना आप उनसे कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उनका रेजोल्यूशन इतना कम होता है कि आप उन पिक्चर्स को डायरेक्टली प्रिंटिंग के लिए यूज कर ही नहीं सकते। ओके, प्लस वो कभी भी व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं होती। अब अगर वो व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि आप उनको एडिट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इतना टाइम अगर एडिट करने में लगेगा, सो प्रोबेबली यू विल थिंक दैट आई शुड क्रिएट इट, है ना, I will create it instead of cleaning this image. So Yandex is a site which is used by the designers, so which is used by people who are industry based, who are experienced. So the images are like, you know, with white background or transparent background, which we can directly use in our print, which I'll show you in a moment. Okay, so I've just clicked here and tell me one theme, on what theme you want to make the print. Let's take a kids print probably. Okay, or you can tell me the theme, any theme. Tell me quickly, tell me any theme, on which theme you want to make up the print that will render in the garment, that will fill in the garment. Animal prints. Okay, let's take animal print. Okay, so we'll create a nice animal print. Okay, so animal motif. Acha, so animal print is fine, but as you know, animal print can be used in kids also, in adolescent, in adult, right? So we'll have to think again that with the animal print, what is the age group that I'm exactly catering to, है ना, किस age group के लिए मेरे को print बनाना है. Let's take a kids print for now. Okay, अब अगर ये kids print है तो ना देखो kids में क्या होता है, everything is very superficially connected. Okay, so एस्थेटिक होना चाहिए, मतलब दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल होना चाहिए वो, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे क्या है, डीप कलर्स को देखते हैं, है ना, बच्चे लाउड कलर्स को देखते हैं, डीप कलर्स को देखते हैं जिनको वो पहचान सकते हैं। तो अगर हमें डीप कलर्स चाहिए होते हैं, अगर हमें शार्प एजेस चाहिए होती है, तो हम वेक्टर मोटिव्स निकालते हैं। अब ये वेक्टर क्या होता है, रास्टर क्या होता है, ये सब आपको रेगुलर क्लास में पता चलेगा। ओके, सो एनिमल मोटिव वेक्टर। अच्छा, दीपा हैज ऑल्सो सजेस्टेड नेचर। चलो दीपा, अभी एनिमल पर बनाते हैं हम, फिर नेचर पर भी करेंगे। सो यस, देयर आर नाइस prints already available. So let's take I'm taking 2 or 3 motifs. Okay, I'm saving them. अच्छा, what does this checks means? ये जो अभी checks आ रहे थे अभी हट गए हैं, जब आएंगे तब मैं फिर दोबारा से पूछूंगी। So save image as, and you always save the image when it is completely open. Partially opened image को save नहीं करना है, क्योंकि पार्शियली ओपन इमेज का क्या मतलब है कि वो उतनी ही सेव होगी जितनी वो उस वक्त खुली हुई है, उतने ही पिक्सल उसके सेव होंगे। ओके, इसका मैं नेम चेंज कर देती हूँ। वर्कशॉप 1। So I'm saving a couple of 2 or 3 images. अच्छा देखो, एनिमल प्रिंट तो है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि we have to use different kind of motifs, so to complement animal print. Animal print doesn't always mean that you have to use all the animals. So it could be your ma'am not getting your voice. Manisha, my voice is clear. Is my voice clear? Can you please confirm, anybody? Yes. Yes, ma'am, it's clear. Yes.
Manisha, clear. there could be some internet issue from your side. Thank you, Deepa. So there could be some internet issue from your side. You can just log out and log in again. Okay. So I was telling that if this is an animal print, then it's not compulsory that we always have to use animal motifs only. We can use a couple of motifs which are related to it. Okay. So let's say with animal, I can take a tree. Okay. So yes. Tree motif vector. And I'll change the color, no problem. I'll change the color in a moment. This also looks fine. This looks nice. This looks very kiddish. Okay. And you know, when you select one motif, then on the extreme right hand side, you get all the motifs which are related to this one. Okay. So you can probably choose from these also, these one also. So I think I'm good with the one that I've already chosen. Okay, so I'll open this and right click, save image. Again, I'm saving this in downloads only. Workshop 2. Coming back. Let's take a base for the print. Okay, let's take a nice base for the print. Now, again, it's an animal print. I do agree. But for the base, I can take any nice texture. Okay, so maybe rugs texture. Okay, when you join the course, I will tell you how to use the keywords. Now, all of a sudden, I was doing animal print and all of a sudden I've written rugs. Okay, so how is it related? ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि किस प्रिंट के लिए क्या कीवर्ड्स आपको या इंडेक्स में या, और मैं आपको सारी साइट्स भी बताऊंगी जहां से आपको मोटिव्स मिल सकते हैं. सो I'll tell you what are the keywords ढूंढ सारी चीजें ढूंढने के लिए ना. So we'll do that. Okay. So for the animal print texture, I like this one. This is a nice base. I think this is good for me. Okay, this we'll take. So I'll open this. And this is the texture. But it is not seamless. Now, again, there comes a point that what is seamed and what is seamless, right? So that, again, I'll tell you in the class, right? Because that's a big topic. I need a session, a single class to explain what is the difference between a seamed and a seamless pattern. And this is just a topic. Print is so deep. ये इतना deep topic है, इतना deep इस पर discussion हो सकता है. मतलब I can name 15 kinds of print placements, okay, which are used in the industry very frequently. Then there are a lot of other printing technologies, print placements, which are used in the industry, which are like, you know, not very frequently used. For example, flock printing. Have you ever heard about flock printing? Anybody? So flock printing, it's kind of a printing, which is, it's a 3D kind of a printing. Okay, so there are various kinds of prints and we'll discuss all of them in the class, okay, in the course. So I'll save this, save image as, and you can give the base as a combination of textures also, right? So yes, we can use a combination as well. So create and save. This is also nice. Okay, girls, you can also suggest what should I take.
You can suggest anything. Please unmute yourself and say whatever you wish to ask, whatever you wish to. Again, I want this workshop to be very interactive, okay? This is also nice. Chalo, let's keep one for now. I need to have some more motifs. So again, let's take a reptile to add some drama in the print, okay? Oh my God, what is this? Reptile vector. I hate lizards. How many of you are in the same category as me? How many of you are scared of lizards? Same here. I hate lizards and I'm actually scared of them. Let's take a crocodile. I cannot handle this. Crocodile vector. This looks better. So, I think I like this. टेक्सचर या प्रिंट फोटोशॉप पर ही बनाते हैं या इलास्ट्रेटर पर किस पर ज्यादा अच्छा बनता है? मैम फोटोशॉप पे सबसे बेस्ट बनता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरल पर भी बेस्ट बन सकता है, फोटोशॉप पर भी बेस्ट बन सकता है और इलास्ट्रेटर पर भी बेस्ट बन सकता है। कैसे डिसाइड होगा कि किस पर अच्छा बनेगा? ये तो आपका प्रिंट डिसाइड करेगा। Your print will decide which software you should use. And yes, it happens. मैं एक प्रिंट को देखकर बता सकती हूँ कि ये प्रिंट इस सॉफ्टवेयर पर सबसे अच्छा बनेगा, पर वो प्रिंट देखना पड़ेगा। हर प्रिंट के इमेजेस अलग होती है, हर प्रिंट का नेचर अलग होता है, प्लेसमेंट अलग होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिंट बनाते वक्त आपको ये देखना होता है कि वो जो प्रिंट आप बना रहे हो वो एक्चुअल फैब्रिक कौन सा है जिस पर प्रिंट होना है, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज होनी है, डिजिटल यूज होना है, स्क्रीन यूज होना है, कौन सा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपकी यूज होनी है, सब्लिमेशन यूज होना है, राइट? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा। ओके मैम, अभी हम किस पे वर्क कर रहे हैं? अभी तो मैं एक बेसिक आपको करा रही हूँ, ये वेक्टर प्रिंट करा रही हूँ। इस प्रिंट को हम लोग फोटोशॉप या इलास्ट्रेटर दोनों पर ये बेस्ट बन सकता है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि अगर लेट्स से ये प्रिंट डिजिटल के लिए जा रहा है तो मैं इलास्ट्रेटर पे बना सकती हूँ। अगर ये प्रिंट स्क्रीन के लिए जा रहा है तो मुझे इसको कलर सेपरेशन में भेजना पड़ेगा, जो कि सिर्फ फोटोशॉप में पॉसिबल है ना? तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे डिस्कस जब हम क्लास में करेंगे ना प्रिंट को, तो हम सब कुछ मैं बताऊंगी आपको। मैं आपको सारे टाइप की प्रिंटिंग बताऊंगी और उसमें बताऊंगी कि इस तरीके का जो है ये ऐसे प्रिंट होगा, इस तरीके के प्रिंटिंग के लिए। मैम आप तो विद सेंड कर सकते हो या प्रिंट फैब्रिक का कि कैसे बनता है और स्केचेस भी कैसे बनते हैं। सुप्ति, आर यू सेइंग कि आपको वीडियो चाहिए कि प्रिंट फैब्रिक कैसे बनते हैं और स्केचेस कैसे बनते हैं? ओके सो सुप्ति, ये तो एडमिन डिपार्टमेंट का काम है, वो तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि वो आपको रिकॉर्डिंग कैसे देंगे, ठीक है? ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट तो पढ़ाना है। आप जिनसे आपकी बात हुई होगी ना डेमो क्लास के लिए, आप उनको मैम कैन यू सेंड अ कॉन्टैक्ट नंबर इन दी चैट बॉक्स? Yes. Hello. Yeah. Yeah. So I'm sorry, I missed. What's the query? Ma'am, can you send the contact number in the chat box? The students are having they are looking for the videos of these things now, so they can contact. Yes. They will. Once you enroll, you'll get all the videos. There's an app they can join. I'll just share the app details. I'll share the contact person details, and I'll share the fee detail. I guess these are the queries you all have. Yeah. Am I right? Yes, ma'am. So I'll Yes, share ma'am. all the details here. You can speak to. I'll share the number 85 88 000 600. This is the number
our helpline number. You can always contact this number for any information you want. This is Prere Designs number, okay? All the information regarding fee, regarding course, duration, anything you want. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. And also there is an offer today for the students who have joined these 2-day workshop. So we are giving an offer. So you can take this course in 15K if you enroll today. I'll just share the link. If you enroll today, you can just take this course in 15K. Otherwise, the price is 18K for 3 months. Okay? Okay, that's great. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Continue. Okay, okay. Yes. So I was telling you that a good print and a good software for that particular print is completely dependent on a few factors. The first one is, what is the nature of print? Is it a vector? Is it a raster or a bitmap? Second is, how is the print going to happen in the actual fabric? Okay. Third is, what is the actual fabric? So everything depends. Okay. Now this print will look more attractive on a synthetic fiber fabric, okay, and not on the natural fiber. Now, what is synthetic, natural? Everything will be covered in the class, okay? It's a 3 months course. 3 months, it's a pretty big time. So you'll get all the details, okay? So, you know, with this course, you're not just learning the software. You're learning fashion. You're learning digital fashion, okay? So that's the thing. So I think this motif is also good. We can copy it. We can save it. Acha, right now, I am taking the motifs from Yandex or any of the website, okay? In the classes, we will learn how to create these motifs. And not like I'm just creating. All of a sudden, it came into my mind that, yes, I have to create a crocodile, so I've drawn a crocodile. It doesn't happen like this, okay? We take a theme. We do research on that theme and we extract out, we take inspiration, motifs, silhouettes from that theme, and then we create motifs, okay? So you will be learning theme designing as well, right? So this is how it happens. Workshop 4. So for now, I've saved 4 images. I'll take one more and we'll create a print out of it. Okay. Okay. Can you suggest one more motif? We've taken tree, we've taken an animal motif, we've taken crocodile, we've taken a base also. What should be the 5th one? Probably a leaf. Yes, we can take a leaf. Flower, paisley. Yes, of course. We have talented students in the batch, in the workshop. Yes. Will paisley look good in an animal motif? I am confused. Okay. Okay, let's take the paisley. Let's see how does this fusion works. Okay, ethnic with animal. Let's see. Okay, let's take a paisley. So all this we learn how to create all this. Okay, right now I'm taking ready-made motifs. We learn how to create them. But you know, this takes time. The workshop will become boring for you. Ma'am, एक ही चीज करे जा रही है ना. और जब मैं print बनाऊंगी तो आपको interesting लगेगी. So that's why I decided to create a print and not a single motif, right? Okay, so I think these are pretty nice. We can take them because the tree that I've taken has almost the same color. So I can take this. So I'll open it. But I'm really not sure how will a paisley and a crocodile go together. Let's see. So
Okay, so we've saved 5 of the motifs and I am opening Photoshop again. Okay, so now whenever we create our own print, okay, how many of you know the difference between a seamed print and a seamless print? Okay, Ankita, we've taken a paisley. Now, flower ka we'll make later on. Okay, so how many of you know the difference between a seamed print and a seamless print? If you know the difference, give me a thumbs up. Otherwise, in the chat box, you can say no, or you can unmute and say no. Okay, so okay, okay. Nobody knows it. Okay. I've got a lot of no's. Okay, fine. See, in this class, I would not be able to, in this workshop, I would not be able to tell you what is the difference. That we'll do in the session. But for now, I just want to say that we are creating. Okay, Hasini knows it. Great. Hasini, can you unmute and tell us what is seamless print? Like it is like tile. If we take one tile and we can make we can able to make seamless print. Like Yes, actually all the Hasini sides are is, connected. they're connected. Yes. So Hasini has partially answered right. She knows it all, but she's partially answered right. So what is a seamless print? It is basically, you know, in print, seam is not a silai. Okay, seam is any edge which is visible. Now, in a print, when there's no edge, fabric can be printed 10 meters, 100 meters, 1000 meters, 10,000 meters, right? Now, when it is printed, like, let's say 1000 meters, you cannot see an edge on the print. Okay, so that is called the seamless one. Now, if you've not understood this, no problem at all. Wait for the actual classes to happen. I'll explain you in detail, okay? So in Photoshop, if we have to create a seamless print, then we have to, first of all, we have to take a square. The document has to be a square. So I'm taking a new document and let's call it as animal print. Okay. Again, the size has to be, let's say, in inches. Let's keep the size as 5 by 5. Acha, now what should be this size and what should be the resolution? There is a big theory about these 3 numbers. We will learn that in the class. For now, I'm just putting up a value. How this is 5, why this is 300, what are these exactly? We'll do all that in the sessions, okay? So for now, I'm taking a resolution of 100. And what is this? RGB, 8-bit, pixels per inch. How about the background? What should be the background? Everything I'll tell you. For now, I'm keeping the background as transparent. So, okay. And I've got a square, which is transparent. The background layer is not locked since the base is transparent. So now I'm going to place up the motifs. Now the placement of the motifs is again very important, very technical, very calculative, okay? First of all, I'll place all of them. So I'll go to the downloads. And these are all that I've used. I can place all of them in one go, okay? That also I'll tell you in the class. Right now I'm taking one by one. So the motif will be placed in a moment. Now this cross means it is embed. When you hit enter, the transformation command is gone. Okay, one thing I would like to request, if you are not understanding anything that I'm doing, please don't worry. Because, this is a step that I do at least after 10 or 12 lectures. Okay, so that we're doing at the first one. So probably you would not be able to understand, but don't worry about that. We'll do from the starting in the sessions. Okay.
in the actual classes. Again, I am placing all of them. Abhi to I'm just placing them randomly. And now what is embed, what is linked, everything we'll discuss in the class. Achha, I'm closing the eye of every this layer. I've just opened up the background layer. And now what I have to do is press Control T. Come here and press Control T. And you know, you have to shorten the size so that I can see the edges. And by pressing Control and Shift, I've just reduced the size. Okay. So next what I'm doing is I am taking this rectangular marquee tool and I'm opening up the feather. Now feathering means that the edges of this अंकिता लैपटॉप में होगा. अंकिता क्या लैपटॉप में होगा? सो फेदरिंग मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आप उसके एजेस को फेदर कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा स्मूथ कर रहे हो. ठीक है, इतने शार्प एजेस नहीं होंगे. या सो लेट्स से मैंने इसका 25 पिक्सेल्स का कर दिया है यहाँ पर. Just a moment. छोटी इमेज को अगर बड़ा करना है बिना पिक्सल खराब हुए तो कैसे होगा? ओके सुप्ति, अगर आपको छोटी इमेज को बड़ा करना है बिना पिक्सल खराब के हुए तो आपको बाई क्यूबिक स्मूदन एंड लार्जर में जाना होता है. ठीक है, बाई क्यूबिक स्मूदन एंड लार्जर. अभी बताती हूँ, एक सेकेंड. ये टाइप क्यों नहीं हो रहा? Just a moment. I think my system is hanged. Okay, I've logged in from 2 systems. Okay, I don't know why this system is creating a problem. मैं एक सेकंड में इसको सेव करके और दूसरे सिस्टम में खोल रही हूँ. ठीक है, just give me 1 moment. तब तक if you have any queries, any doubts, please ask. It will take 2 minutes बस. Adobe Photoshop में ये आप दिखा रहे हैं. Yes, we are doing Adobe Photoshop. फैब्रिक के बारे में और ज्वेलरी टिप्स. ओके,
फैब्रिक के बारे में और ज्वेलरी टिप्स में क्या जानना चाहते हो, और फैब्रिक के बारे में क्या, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ fibers and then yarn, then there are different types of constructions. और ज्वेलरी के बारे में, ज्वेलरी हम लोग क्रिएट करेंगे. Sukti, let me just intervene in between. Yes. ज्वेलरी में ना बेसिकली आपको क्या है कि अगर आपको एक बार सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो जाए तो उससे आप चाहे ज्वेलरी बनाओ, चाहे गारमेंट बनाओ, चाहे पैटर्न बनाओ. So the main thing, the most important thing is that you should know about the tools of the software, right? And how to Yes, implement is your creativity. आप उसको किसी पे भी, अगर आपको एक बारी एक लाइक से आपको फोटोशॉप आ गया तो आप उसमें चाहो तो फोटोशॉप फोटोज एडिट करो, चाहो तो आप अपना पोर्टफोलियो एडिट करो, चाहे आप उसमें नई क्रिएशन करो, राइट? So in the same way, this particular workshop is on the software, right? So and there is another program we have about textile designing. So there you can learn. We'll have workshop on textile design soon. So there you can learn about textiles, fabrics, or all these kind of things. You know better. Yes, yes. And jewelry designing again is the interpretation of your creativity, like jewelry design, garment design, illustrations. We definitely will tell you how to do, because that is something that is a presentation. And when we talk about CAD software, the main purpose of softwares is to enhance your presentations. These are presentation tools. Like I tell you, like for example, why Photoshop or these things are so important in today's life. कोई बता सकता है क्यों इतना important है? आप हाथ से भी स्केच बना सकते हो, सब कर सकते हो. It's not about कि आप उसमें edit कर सकते हो fast. I tell you what happens. आपने एक swatch बनाया, छोटा सा एक swatch बनाया, right? अब आप एक तो या तो ये कर सकते हो, उसका पूरा एक garment बनाओ, पूरी उसकी production करो, and then you click pictures and then spread. Otherwise what happens is Photoshop, Illustrator has some such tools that you can just put your swatch on the garment and you can easily present it to your clients. आपको आज की डेट में मैक्सिमम गारमेंट्स डिजिटली बन जाते हैं बिफोर दे आर एक्चुअली मेड. हमें डिजिटली करने से हमें पहले पूरा लुक पता चल जाता है कि हमें इसमें कैसे दिखेगा. मैम जैसे एक डिजाइन. Yes ma'am, yes ma'am, I'm just opening up. हाँ, सुप्ति, ये मैम से आपने पूछा है कि एक डिजाइन बार बार चाहिए होता है, जैसे आपने बोला था लहंगे में कैसे होता है. हाँ, ये सब आपको सिखाएंगे कि कैसे उसको रिपीट किया जाता है. आपने एक पैनल बनाया और उसको पूरे लहंगे में हम क्रिएट कर सकते हैं. इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग टू डू एंड टू इंटरेस्टिंग आइडिया आल्सो टू इम्प्लीमेंट. Okay, yes, so I'm sharing my screen. Okay, so these were the prints that we were doing in the last session with the batches. And see, for example, there's a winter collection, yeah, there's a collection which has checks and stripes, okay, which has diagonal checks or some prints maybe. So before actually making the collection, we show them digitally, right? क्योंकि digitally हम लोग बहुत जल्दी से कर सकते हैं ना. We can present it in moment. Like कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम with the smart object फटाफट से prints को replace कर सकते हैं, right? तो कोई भी चीज देखो actual बनेगी तो कपड़ा कटेगा, फैब्रिक स्टिच होगा, उसके ऊपर जो भी फिनिशिंग होती है वो होगी, तो तब उसकी लुक पता चलेगी. बट विदाउट इवन टचिंग द फैब्रिक, विदाउट इवन टचिंग एक्चुअल थिंग, हम डिजिटली उसकी लुक पता कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं ना? ओके. Yes, ma'am. Yes.
ओके, यस यस सुप्ति, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं बच्चों को सेशंस में पढ़ाती हूँ और बच्चे स्क्रीन शेयर करके कभी कभी मेरी स्क्रीन पर काम करते हैं। दिस इज नथिंग। अब ये मेरा दूसरा लैपटॉप आ गया है एक्चुअली, ये वो वाला लैपटॉप नहीं है जिस पर मैं कल करा रही थी, तो इसमें जितना भी मैं वर्क दिखाऊंगी आपको, ये सारा अब अगेन अलग वर्क होगा सारा ये। सो ये एक प्रिंट है जो हम क्रिएट कर रहे थे, और अगर मैं लहंगे की बात करूं तो लहंगे का मेरे पास इसमें बहुत अच्छे खाकास बने हुए हैं, तो मैं आपको फोटोशॉप में ना इस तरीके के खाकास बनाने सिखाऊंगी कि आपको सिर्फ उस फाइल को खोलना है और आप उसमें मोटिव्स प्लेस करो, वो अपने आप प्लेसमेंट बन के आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट एवरीथिंग वील डू। ओके, सूट्स वगैरह की प्लेसमेंट्स वगैरह के सब खाकास रेडी होते हैं, आपको सिर्फ उसमें मोटिव डालने होते हैं, द प्लेसमेंट इज डन। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा वर्क दिखाती हूँ। अब ये वाला सारा अलग वर्क आ गया है। अच्छा, हम कल बेडशीट्स की बात कर रहे थे ना, रग्स एंड बेडशीट्स की बात कर रहे थे हम, राइट? ये देखो, ये क्या है बताओ, ये किसका प्रिंट हो सकता है? ये एक कुशन के लिए प्रिंट बनाया था। ओके, 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 डू यू लाइक दिस प्रिंट? Yes, ma'am. सो ये जो है, इसके सारे मोटिव्स यांडेक्स से लिए हैं। ठीक है, सारे मोटिव्स यांडेक्स से लेकर और फिर ये प्रिंट क्रिएट करा हुआ है। अभी हम वो भी करने वाले हैं जो हमने सारे खोल रखे हैं यहाँ पर। मैं एक दो और इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखाती हूँ। So yes, this is also a nice one. ये ऊपर वाला भी अच्छा है। So this is a flat sketch of a top. Okay, टॉप जो है वो प्लीटेड फैब्रिक है और ये उसका फ्लैट स्केच है। तो देखो, हम विदाउट एक्चुअली इवन टचिंग दी फैब्रिक, आप जो है उसका पूरा लुक पता कर सकते हो, उसका पूरा टेक्निकल लुक पता कर सकते हो विद these सॉफ्टवेयर्स। देन हम इसमें फुटवेयर्स भी बनाना सीखेंगे। ये सारा ना इलास्ट्रेटर का काम है, मैं खोल रही हूँ फोटोशॉप में, बट ये सारा इलास्ट्रेटर का काम है। ये इस तरीके के फुटवेयर्स भी हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, व्हाट एल्स डू यू वांट टू, ये हैट है एक। अच्छा, दिस इज ये सूट है, इट्स अ प्रिंटेड सूट। तो देखो, सारी चीजें ना इसमें बहुत प्लान्ड है। प्लान क्या है, जैसे कि ये जो पॉकेट है, इस पर क्या कौन सी पेटल आनी चाहिए, है ना, लपेल में कितना प्रिंट आना चाहिए। सो एवरीथिंग इज प्लान्ड। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ये प्रिंट बनाया है। इज इट इंटरेस्टिंग? डू यू लाइक दिस? Yes, ma'am. यस, सो ये सारे बटन्स वगैरह ये सब बहुत मतलब मीनिंगफुली क्रिएट करें। ये देखो, इसमें जो है इस बटन में ये 4 होल्स बटन है, तो यही 4 होल्स बटन ही लगेगा इस ड्रेस में, इसीलिए ये बनाया है यहाँ पर। सो नेक्स्ट, फोटोशॉप का कुछ दिखाती हूँ। इवन दिस इज अ वेरी नाइस। ये एक टेबल रनर के लिए प्रिंट बनाया था। ठीक है, यू नो टेबल रनर जो स्लीक होता है टेबल पे, राइट? सो ये जो है ये
दो साइड्स में इसमें प्रिंट दिया है एंड देन बीच में देयर इज अ शेड. ओके, नाउ दिस इज प्रिंटेड फॉर अ लिनन फैब्रिक, राइट? इसमें दिस प्रिंट इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अ हैवी फैब्रिक. ठीक है, तो लिनन जो होता है वो बास्ट फाइबर होता है, थिक होता है, तो वो उसकी प्रिंटिंग के लिए बनाया गया है. ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली कम ओवर आवर मोटिव्स जो हमने लिए थे अभी. यस, तो मैंने अभी क्या करा है, मैंने यहाँ पे एक फेदरिंग दे दी है 25 पिक्सल से. ये 25 टाइप नहीं हो रहा था मेरे दूसरे लैपटॉप में, आई डोंट नो क्या हैंग हो गया, क्या हो गया उसमें. सो मैंने एक सिलेक्शन बना लिया यहाँ पर. मैं इस सिलेक्शन को ना कंट्रोल शिफ्ट आई कर रही हूँ तो ये रिवर्स सिलेक्शन बन जाता है. जब मैं इसको डिलीट करूंगी तो होगा क्या, इसके ना एजेस डिलीट हो जाएंगे. अभी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको रास्टराइज कर देती हूँ मैं, अब डिलीट हो जाएगा ये. ठीक है, तो हो गए ना, देखो एजेस ब्लर हो गए. दिस इज व्हाट आई वांटेड. ओके, तो मुझे थोड़े से और ब्लर करने हैं एजेस. फिर से मैंने इसका सिलेक्शन ले लिया, फिर से कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया और दोबारा से डिलीट कर दिया. ये लुक मुझे एक्चुअल चाहिए थी. ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास बेस है. मैंने क्या करा है, मुझे ना इसको इसके सेंटर में रखना है बिल्कुल, राइट? तो कंट्रोल टी अगर मैं प्रेस करूंगी तो मैं देखूंगी कि मेरे पास एक ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ गया है. तो मैं इसको जो है, ये तो बेस है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट सेंटर में रख लेती हूँ एक बार. तो ऐसे रख दिया मैंने. अच्छा अभी क्या करना है, कंट्रोल जे से मैंने इसकी लेयर की कॉपी कर ली और मैं फिल्टर में जा रही हूँ, आधे में जाके ऑफसेट में जा रही हूँ मैं. इसका जो साइज है वो 5x5 इंच था, रेजोल्यूशन 100 था, तो 500 का आधा हमें डालना है 250 जो कि ऑलरेडी देयर है फिलहाल के लिए. तो मैं इसको ओके कर दूंगी. इसके बाद में दोबारा से मैं इसकी कंट्रोल जे प्रेस करके एक कॉपी ले लूंगी और दोबारा से मैं फिल्टर में जाऊंगी. मुझे पता है ये आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज इसका थोड़ा सा लॉजिक होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, बट अभी आप देखो कि बन कैसे रहा है, कैसे बनेगा ये. आपके बारे में इसमें 0 डालूंगी और इसमें 250 डालूंगी और ओके कर दूंगी. अच्छा अभी क्या है कि एक तो ये है इसमें और एक इसमें ये है, तो मैं इन दोनों लेयर्स को लेती हूँ और मर्ज कर देती हूँ इनको. अब मैं ऑल्ट प्रेस करके इनकी कॉपी ले रही हूँ ऐसे करके. ठीक है, तो मेरा एक बेस टेक्सचर जो है वो रेडी हो गया है. ओके, क्यों मैंने ऐसा करा, क्योंकि मुझे सीमलेस टेक्सचर चाहिए था. अब जब मैं इसका रिपीट करूंगी ना तो इसमें कहीं भी कटिंग नहीं आएगी, ये पूरा सीमलेस आएगा. ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सारी जितनी भी ये बेस वाली लेयर्स थी इनको लेकर कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, मर्ज कर दिया इन सबको मैंने. अब मैंने इस वाले मोटिव को खोल लिया है, कंट्रोल टी प्रेस करके मैंने इस मोटिव को थोड़ा सा छोटा कर लिया है, ऐसे करके इतना छोटा कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया. सॉरी, बेस हो गया. कंट्रोल टी प्रेस करा मैंने दोबारा से और इसको मैंने छोटा कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया. अच्छा व्हाइट कलर इसका हटाना है तो हम यहाँ पर क्विक सिलेक्शन मैजिक वॉन्ड टूल ले लेते हैं और व्हाइट कलर पर मैं सिलेक्ट करूंगी. डिलीट नहीं होगा क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, रास्टराइज कर लेते हैं, अब डिलीट हो जाएगा. एंड कंट्रोल टी. ठीक है, अगर मैं इसको जूम करती हूँ तो आप देखोगे कितना सारा व्हाइट एरिया रह गया. तो ये सारा व्हाइट एरिया जो है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं टॉलरेंस को थोड़ा 10 कर देती हूँ और फिर से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ. अब सारा व्हाइट एरिया सिलेक्ट हो गया है और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ. कंट्रोल डी, सिलेक्शन हट गया है और अब ये विदाउट व्हाइट कलर है. What is the timing of daily lectures? The timing will be 3 to 4. Rest, I don't know, it could be changed. Yes, ma'am. Yes, timings are 3 to 4. Yes, but we will Yeah. we can rework on them if it is required, है ना? Yeah. हाँ, But tentative, otherwise right so it's now 3 we to have 4. classes from 3 to 4. हाँ, right now we have classes from 3 to 4. Yeah. So this I have taken, इसको मैंने कंट्रोल टी प्रेस करा एंड मैं रूलर से ये मैंने एक इस तरीके से मैंने एक सेंटर मार्क कर लिया यहाँ पर और फिर मैंने इस ट्री का भी सेंटर लिया, इस ट्री के सेंटर को और इसके सेंटर को मैंने मैच कर दिया और वेरी क्विकली मैंने इसका जो है छोटा कर दिया इसका साइज और कंट्रोल जे प्रेस करा और दोबारा से मैं फिल्टर में गई हूँ, अदर में गई हूँ, ऑफसेट में गई हूँ, 250 और 250 कर देते हैं इसको
और ओके कर देते हैं। चारों तरफ आ गया है ये। अब मैंने ये वाला प्रिंट खोल लिया है। ओके, मैंने इसको भी कंट्रोल टी प्रेस कर दिया और इसको मैंने छोटा कर लिया है। इसको मैं एक काम करती हूँ, मैं इसकी ना मैं प्रोपोर्शन से और रोटेशन से प्ले करती हूँ, ठीक है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ टर्म एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन? एक्चुअली कभी ये सुना है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन क्या होता है? Yes, Hasini. Okay, Hasini is a. We have a talented girl today, Hasini, right? So, Deepa, if you haven't heard of it, not a problem at all. हम लोग ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि एक प्रिंट बनाते वक्त हम क्या कैसे उसके साथ मतलब वर्क कर सकते हैं। ओके, सो ये सब सारी चीजें क्या होती हैं। तो नो प्रॉब्लम अंकिता, वी लर्न इट, वी लर्न हाउ टू डू इट। सो मैंने थोड़े से इसके रिपीटिशंस यहाँ पर कर लिए हैं एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई जस्ट हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। मैं एक इसी से एक इसको एक प्रिंट में क्रिएट करके और एक क्रोकी में रेंडर करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो एक मोटिव मेरा क्रोकोडाइल वाला रह गया था जो हमने काफी मन से लिया था, तो उस मोटिव को तो ले ही लेते हैं हम। सो अच्छा, नए वाले वर्जन्स में ना डिजाइन, कलर, टेक्सचर, लाइन, शेप, मनीषा, ऑल दीज आर एलिमेंट्स। ओके, और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। सो वेरी क्विकली आई एम सिलेक्टिंग दीज और इसको मैं रास्टराइज कर देती हूँ। डिलीट कर दिया मैंने इनको, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड हटा दिया इसका, कंट्रोल टी प्रेस करा और मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा छोटा एंड अगेन कंट्रोल टी। सेंटर से सेंटर मैच कराना पड़ेगा, अदरवाइज सीमलेस नहीं बनेगा। सो आई थिंक मेरा सेंटर, माय सेंटर इज गुड राइट नाउ। कंट्रोल जे मैंने कॉपी कर लिया। फिल्टर अदर ऑफसेट, इस बारी मैं एक में ये जरूर रख देती हूँ, एक में 250 रख देती हूँ। चलो अब इसी को मैं प्रिंट बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। वैसे हम इसमें और भी बहुत सारी चीजें कर सकते थे, पर फिलहाल के लिए मैंने इन सारी लेयर्स को जो है कर दिया मर्ज। अब ये एक ही बन गई है। अब मैंने करा इनका सिलेक्शन एंड फेदरिंग सिलेक्शन ऑन है तो वो मुझे नहीं चाहिए, मैंने 0 कर दिया यहाँ पर। मुझे एक प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए। Go to edit, define pattern, animal print for kids name is just fine. Or can I render this print in this dress? ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इसमें रेंडर कर लेते हैं हम। So actually ना इसके पिक्सेल्स, इस इमेज के ना पिक्सेल्स बहुत कम है। I will quickly take a nice image from Yandex. So what should we, ये हमने kids करा था ना, kids vector garment, black and white. For time being I'm taking this one, opening this, save image as, and I'm saving this. इसको हम किसी भी फैशन क्रोकी पर किसी पर भी कर सकते हैं। ओके, so I'm opening up that particular where had I saved that? Downloads में तो नहीं दिख रहा, डेस्कटॉप पर करा था क्या? Yes. So I have this and very quickly I'm doing the selection. Okay, pocket I don't want to be a print. Okay, neither these cuffs I want them to be plain, right? This placket also I want it to be plain, so I've just selected the shirt and with the selection मैं यहाँ पर जा रही हूँ, पैटर्न में जा रही हूँ और अच्छा ये ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत कूल लग रहा है ना? लुकिंग नाइस, यस, अच्छा लग रहा है ये। ओके ओके यस, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट आ क्यों रहा है? वो ये इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है बिकॉज इसका जो वो होगा ना मोड होगा वो ग्रे स्केल है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आरजीबी में कन्वर्ट कर दो, अब आपका प्रिंट नॉर्मल कलर में आ जाएगा।
So now we have the color and this scaling is just perfect. मैं इसको 90 कर देती हूँ. ठीक है, कर सकते हैं हम ऐसे. Yes. Yes. So मैंने दोबारा से ये सिलेक्शन बना लिया है और ये भी सिलेक्ट कर लिया मैंने. बटन नहीं सिलेक्ट करा है मैंने. ओके, सो कव्स मैंने ये सिलेक्ट कर लिए हैं और आई एम टेकिंग अ कलर. आई एम पिकिंग अप अ कलर फ्रॉम दिस इमेज ओनली. मतलब इसका कोई भी एक कलर ले लो. चलो यही वाला ले लेते हैं और न्यू लेयर और बैक स्पेस, कंट्रोल डी, टर्न दिस इनटू मल्टीप्लाई मोड एंड यू आर डन. ठीक है, वी कैन डू दिस. यस, सो वी मेड आवर ओन प्रिंट और हमने उसको इसमें रेंडर करके देखा है. अब इसकी रोटेशन, इसके कलरवेज, इसके स्केलिंग, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, ओके ओके. सो we have a couple of more minutes. Anybody wants to ask something? Ma'am, do you want to say, do you want to inform them anything that how can they like join or something? Yes. I'll just share the app details. You can download on the app, and if any query regarding any specific thing you want to learn, please do let us know. Yes. Sure. So I'm just sharing. Just check your app. Just check your chat. I have shared the app link. Okay. How was the class? Does everyone enjoyed? Yeah, it was good. Yes, ma'am. So pretty, and I am understand lots of things also. That's really nice. That's really nice. I just wanted to ask. So if I'm not able to join this course, will how often do you have these courses? So would it be there after 3 months? Will you have another course, something like this, or? Yes. This program is our running program. Okay. We have I mean, but yes, like better you join soon, because we might modify different, like we may bring advanced level, like this is like something which is good, but then we can have we have some modifications to our courses, definitely. So So probably we could not have we could not have a course for the basics, so that you would not be able to avail. That could be a case. Yeah. Okay. So But I was thinking to join yeah. maybe in December or Jan, because right now I can't. I have a baby, so it's not possible for me to join right now. Sorry. Okay, got it. Right now, why you can't join now? Just want to know again. I have a baby. I can't. It's not possible for me to join right now. See, the thing is that we have recorded sessions. Like you will be connected to the app. So even if you can't join 3 to 4, you can access these recordings later, so whenever you have time. Practicals वगैरह होंगे फिर? Yes. You can attend 1 or 2 classes in between and ask ma'am questions. She's very helpful. Like the students are very, very happy with her. We have a group. You can have a always WhatsApp post your group. queries in the group. If I actually Yeah. recorded sessions and all, that works, right? And do you have like tests and exams? ऐसे कुछ नहीं होगा? We have assignments. You have to Because finish because those time assignments. पे You will have a attend करना, I don't- portfolio to submit. Okay, you will have a portfolio to submit, which will be helpful for you only in order to access the companies. Correct. Right? So we help students build up their portfolio. We help them build up their designs so that they can apply to different. And these assignments are regular assignments that you need to finish next day. Okay, but yeah. if exams, because that is something is very difficult, because I don't have a support system. No, there are no exams. There are no exams. My baby, so the only time I can work is when my baby sleeps. We do understand that. We have many students who are like busy during the day, and they access to the recordings later on. And Yeah. That Oh, works. ma'am, probably what we can do is we can keep one session in 10 days on a different time.
है ना? We can do Yes, that. yes, we can do that. No, this That- time that- still works. This time is still good. Perfect, perfect. Then you should not, I mean, you know, you should never miss the chance. That's what I would Yeah. say. कि अगर आपके पास एक opportunity है, कल की wait कभी भी मत करो. मतलब मैम को तो हम बहुत जगह पे engage करते हैं. मतलब she is very good in pattern making. She does, she teaches pattern making with us, and I mean, it's amazing course. Like the way she teaches this thing is amazing. So any other details, like I have already shared this number with you. In case you have any query, you can always contact at this number. I am sharing it again. If anyone has missed the details, 8588000600. Okay. Thank you. Okay. 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 Thank you, everyone. Thank you. See you in the session. See you in the class. Thank you. Thank you. We have another session just after this. So we Yes. have to close the meeting quickly. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Ma'am, there are a few students who have some queries. Can I leave this and then you can solve their queries? Someone is asking for recording. Someone is asking for revision. Yes, or yes, something yes. like No, that. no, we leave this and I have already shared the number. They can always call at that number. अच्छा and we अच्छा, have no problem. ठीक है. no ठीक है. issues. Okay. You can call, ask for the recording at this numbers 8588000600. आप यहाँ पे call करके recordings पूछ सकते हैं. Okay. Okay, thank you Thank you. everyone. Thank you. Bye. Thank you.